Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, citizenship, and today is its 8th lecture. So my dear students, now is time for an activity. So quickly focus because I'm about to tell you a story of a boy. So my dear students, you can see that here is a picture of teacher in the class. Dear students, your school principal wanted to know what should we celebrate this year, fun fair or charity day. You will have to give your opinion about without any hesitation. So, what are the kids saying? We should celebrate Charity Day. So, the other boy is also saying Charity Day, Charity Day. But no, we should arrange fun fair. You are so mean. You should also vote for Charity Day. Go away. I want to eat yummy food, wear new clothes. It is a great refreshment and entertainment for us. My dear students, if Ali wants to celebrate fun fair instead of charity day, you should respect his choices. It is his right to express his thoughts and views. You should not say hateful words. This is a wrong approach. As you all enjoy your right to freedom of speech, likewise let him enjoy his right. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि आपकी क्लासरूम में आप लोगों की मुख्तलिफ थॉट्स होती हैं और आप उनको एक्सप्रेस जब करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो जब आप किसी की राय से इख्तलाफ करते हैं या उसकी स्पीच से या उसकी ओपिनियन से आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो आपको उसको हेटफुल वर्ड्स नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जैसे आपका राइट है खुल के इजहार करने का, इसी तरीके से दूसरे इंसान का भी हक है कि वो अपनी राय का खुलकर इजहार करे. लेकिन जब आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर रहे हैं तो आपकी राय से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. वहां पर लिमिट्स आ जाती हैं विच यू नीड टू फॉलो. ओके, सो इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि हर इंसान की अपनी राय है और उसको अपनी राय का इजहार करने का हक है, विच इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो हमारा आज का लेक्चर भी इसी बारे में है. लेट्स क्विकली लुक एट द ऑब्जेक्टिव. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो द skills that will be developed are recognition and understanding. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective and argue not with the people of the scripture unless it be in a way that is better, save with such of them as do wrong and say, we believe in that which hath been revealed unto us and revealed unto you. Or Allah and your Allah is one and unto him we surrender. So my dear students, हमें जो है दूसरों की जो राय है उससे इस तरीके से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए कि उनको तकलीफ हो. हर इंसान के पास अपनी राय का इजहार करने का हक होना चाहिए, लेकिन आपकी राय से या आपकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए. So my dear students, now let's quickly refresh your knowledge. Ask students different questions and tell them what they can answer freely without hesitation. Who is their leader? आप सोचें और इसका जवाब दें. You are free to answer. Who inspires them? आपको कौन इंस्पायर करता है इस बारे में बताएं. What they want to be in future and why? Quickly think and answer. Very good. So my dear students, from here we will move forward. So आपने इस एक्टिविटी के थ्रू जो मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की है, इससे आपने अपनी राय का इजहार किया है. ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको इंस्पायर करता है, so this is called freedom of speech. Now my dear students, quickly open page number 11 in your books. I hope everybody has opened page number 11. Now let's quickly move forward towards freedom of speech and its importance. Freedom of speech is the right to seek, receive, and convey information and ideas of all kinds through any means of communication. It is a fundamental human right granted by every constitution because every individual is born free. So my dear students, basically freedom of speech है क्या कि आप अपनी
बात का इजहार कर सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप डिजिटली कर सकते हैं, आप आपस में निगोसिएशन के दौरान कर सकते हैं। सो जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं तो ये क्यों ज़रूरी है या इसका राइट आपको क्यों हासिल है? क्योंकि हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और दुनिया के हर मुल्क में इंसान को ये हक है कि वो अपनी बात का या अपनी राय का इजहार कर सके। He lives in a free country as a citizen and enjoys all privileges. He grows up with some values, norms, ideas, and thoughts. He has his code of life. While living in a society, he observes certain trends that are social, political, and cultural. Sometimes he likes and sometimes he dislikes them. सो माई डियर स्टूडेंट्स, एक आज़ाद इंसान जो कि एक आज़ाद मुल्क पे पैदा हुआ है वो आज़ाद है, वो आज़ाद पैदा हुआ है, उसकी अपनी ज़ाती सोच है, वो अपने तरीके से लोगों को देखता है, वो अपने तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। पॉलिटिकली फ़न, कोई चीज़ें आपके लिए एज़ फ़न होती हैं, एज़ क्रिएटिविटी के तौर पे होती हैं, पॉलिटिकल होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो उसको अपने तौर पे ऑब्ज़र्व करता है। कुछ चीज़ें उसको पसंद आती हैं, उनसे वो इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों से वो इख्तलाफ करता है, क्योंकि सोच है ना आपकी, तो आप सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो आपको इख्तलाफ भी हो सकता है। सो in this situation, the right of freedom of speech gives him a safe way to share his ideas and thoughts with the people without any fear. His views may be proved productive for society. So my dear students, इस तरह से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हक देती है कि वो जो उसको इख्तलाफ है या वो अपनी राय का इजहार कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। इस तरीके से क्या होगा, हो सकता है कि उसकी राय से या उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से, उसके आइडियाज से, उसकी थॉट्स से दुनिया में या सोसाइटी में कोई बेटरमेंट या कोई बेहतरी आए। When a person shares his ideas on a political platform, he plays his part in forming the government. When he gets involved socially, he works for the betterment of society. When he speaks for the rights of diverse groups or minorities, he fulfills the duty of a good human being. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं, आप सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, तो आपको आपका हक है कि आप वोट कास्ट करें। सो दिस इज ऑल्सो अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपकी राय का आज़ादाना इजहार है कि आप जिस लीडर को चाहें उसको वोट कास्ट करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसके अलावा आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आपको राय देनी चाहिए कि कैसे हम इस सोसाइटी को बेहतर बनाएं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको गलत लगती हैं और वो नहीं होनी चाहिए और कैसे हम उनको बेहतर बनाएं। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच मेक्स अ पर्सन विजनरी, ठीक है, विजनरी, कैसे आप एक विजन के थ्रू आप चीज़ों को खुली तरीके से देख सकते हैं, आपका एक देखने का नज़रिया जो है वो डेवलप हो जाता है कि आप ओपन माइंडेडली चीज़ों को देखें और फिर उनका इजहार कर सकें। एंड हेल्प हिम टू प्रमोट पॉजिटिव आइडियाज़. But the right of freedom of speech does not allow us to cross our limits, and speak against other religions, cultures, values, or norms. As responsible citizens, we should avoid aggressive and hateful speech. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको इस बात का राइट नहीं देती कि आप दूसरों की को डिसरिस्पेक्ट करें, आप उनको हेटफुल कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ, आप उनको एब्यूज़ करें या आप उनके साथ झगड़ा करें या कॉन्फ्लिक्ट करें। सो योर आइडियाज़, आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपका ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी राय से हमेशा बेहतरी पैदा होनी चाहिए, झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होना चाहिए। So my dear students, the wrap up of today's lesson is people are born with the right of freedom of speech. While expressing the thoughts, we should keep in mind the sentiments of others. हर इंसान आज़ाद राय के साथ पैदा हुआ है, लेकिन जब आप अपनी राय का इजहार करें तो दूसरों के इमोशंस को या उनको तकलीफ मत पहुंचाएं। So my dear students, your practice for today is worksheet freedom of speech,
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. ठीक है, ये एक saying है. What is freedom of speech? You have to define it. What does freedom of speech improve? How does freedom of speech improve a society? Should there be some limits on what we are free to say? Should people be free to spread hatred, incite violence, and ridicule others' religions and nations? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है. फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे जो है वो सोसाइटी को इम्प्रूव करती है, क्या आपको कुछ भी कहने की इजाज़त होनी चाहिए, कुछ भी, देयर शुड बी नो लिमिट्स. सो ये भी आपको एड्रेस करना है. इसके अलावा क्या पीपल जो है इंसान को गलत बातें या हेटफुल कॉन्वर्सेशन जो है वो भी बोलने का जो है फ्रीडम होना चाहिए. देन द लास्ट इज मैनी कंट्रीज सेंसर वेबसाइट्स टू कंट्रोल व्हाट देयर सिटीजन्स एंड can and cannot see. Is it this dangerous? Give reason for your answer. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड से ग्लोबल सिटीज़न हैं हम लोग, और हम लोगों का जो है हम ऑल्सो वी आर डिजिटल सिटीजन्स, तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो लोग कुछ साइट्स को सेंसर कर देते हैं और उनके लोग जो हैं वो उनको नहीं देख सकते. तो आपको क्या लगता है कि दिस शुड बी डन और नॉट? ऑल्सो गिव रीज़न फॉर योर आंसर. ठीक है, आपको ये चीज़ ठीक लगती है या ठीक नहीं लगती? एग्जाम्पल के साथ कोट कीजिएगा कि क्यों सेंसरशिप होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए. ओके, now we will move forward towards homework. Home activity number 5. Suppose you and your friend are working on a project. Your friend presents an idea you disagree with. Similarly, he also does not like your idea. In such situation, how will you behave and figure out the problems in a peaceful manner? So my dear students, आप दोस्त जो है वो काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको उसका आइडिया पसंद नहीं है, उसको आपका आइडिया पसंद नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आपको इसका एक सोल्यूशन देना है. ठीक है, think about it and give a solution. Then another homework is on page number 17, question number 2. What is freedom of speech? You have to define it. Then on page number 17, question number 3, how freedom of speech, exercise C में है question number 3, how freedom of speech can play a positive role in the progress of society. कैसे जो है ये अभी हमने वर्कशीट में भी किया है कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपको एक्सप्रेस करने में या एक सोसाइटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है. आंसर दैट इन योर नोटबुक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम लोग जो है वी विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन and negotiation as tools for resolving conflicts at home and school. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम स्कूल में और घर में बात करने से, डिस्कशन करने से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज.